In last class I have told you about a program in which we have added two durations. Okay, algorithm we have discussed, and this was the basic thing that I have discussed, that how the durations are to be added. I have told you how to add duration, like we have to add seconds first, then minutes, then hours, and the carryover from seconds is to given to minute, and the carryover of minutes is to given to hours. This I have told you. This was the last program that we people have done. Okay, now let's start today's topic. So first of all, I just want to tell you something about print. For example, I want to show the duration. I want to show duration this way. I want to show 4, 10, 20. I want to show output this way. Okay, for example, this is the duration 3 that we have got after calculation, right? So I want to show this. So like in the example, I have asked you to print this way. Print 4, not 4. It was H, it was M, and it was S. Okay, so I have told you to print this way. H, not plus because the data types are not similar, comma, in quotes, colon, M, comma, in quotes, colon, then S. I have told you to print this way. So I am telling you one more way to write the same thing. You can print the same using this way also. H, comma, S, M, comma, S. Okay, then you will put a comma and you will say SEP is equal to, in single quote or double quote, you just say quote. Okay, now when you print this answer, the answer will be 4, 10, 20. Now why will this come? That I am going to explain you today. See, this SEP is a keyword, right? It's a clause that is used to define separator in between multiple values. So when your print statement is printing multiple values, like we are printing H, M, and S, so these values are to be separated by a colon sign. So this is the clause that we can use to separate values. Okay, I am giving one more example. If I have to say print Manan, Manoj, okay, just correct the spelling. I'm correcting the spelling. Say Manoj, inverted commas, say Rima, okay, Yarina, Rina, right? I have to correct it again in that case also. Then I can say and is equal to, what can I do? So I want to give a a slash in between these names. So I'll be putting a slash this way. So when these names will be printed, Manan slash Manoj slash Reena will be printed. Okay, so this is to keep a separation sign in between the values. This is the first thing that I wanted to explain you. Now second thing, say if I say print hello, okay, then I say print India. Okay, so what am I doing? I am printing hello in India. Okay, if I see the result of this code, since we have written two statements, so what is the property of print? Whenever something has been printed using print always gives output on the next line. So when this output will be printed, it will be hello and India. Okay, what I want to put hello India in similar line. So you can say, sir, we can print this way.
we can say hello India. Okay, then it will be on the same line. But this is not the way I want. I want two prints to be used, but output has to be hello India. Okay, now how can I do this? So I can say print hello. Okay, print hello and comma, then I can say and is equal to a gap. Then I say print India. When you will see the print of this, the output of this code, you will see hello India will come in a single line. Okay, and why is this happening? Because we have asked print to print hello, and we have told to end the line with a space. It means when this print will print hello, this ending statement will not be a new line. By default, ending statement is \n, that stands for a new line. Okay, new line. So we have changed it. We are saying print hello, that is okay, but end this line with a space. So hello will be printed, and we have given separator between two prints, that is a gap, right? We have specified a gap. So this line will not be over, and hello will be printed with a gap, and then when print will be printed using, like India will be printed using print, then it will come on the next line in the same line, right? So this is the basic idea of and. If you want to put anything, we can put anything. For example, if I have to put hello star India, so I'll be writing print hello and is equal to star. Then I say print India. Then I believe that you know that what answer will come. So it will be hello India. Okay, so these are the two things that I wanted to tell you. And if you have any query regarding this, you can ask. I am waiting for 1 minute. So I am telling you the difference between separator and AND. So I am coming back to the example. When multiple values are being printed using a single print, and we are to specify that what separator will be used in between the multiple values, then we go with separator. Okay, this works with a single print, and to provide a separator between the values which has been printed by a single print statement and separated by a comma. Okay, so this is the basic idea of separator. Now what does AND do? Whatever you write will be ended by the character or the word you are specifying after AND. Okay, it prevents print to change the line, because by default, if we are printing multiple prints, so every time the print will come on the next line. So AND command terminates the line with the specified character or expression that you are writing after AND. Okay, the difference is very crystal clear. If you have multiple values and you want to provide separator in between them, then you can go with separator. And if you want to denote the end of the line, like how the line will be closed, how the print will be terminated, then we go with AND. Okay, so this is the basic difference. AND does not work in between the values. I believe the idea is clear to you. Why wasn't separator used in place of name? Okay, let me check. I have used Manoj, Reena and Manan, and AND was slash. So the separator, whereas these commas will come, there only a slash will come. Astha, is it okay? Sir, if I want to add ratio sign after 20,
also so. After 20 I am not getting kartavya. Why are you saying after 20? I am not getting it. But if you want to put a ratio sign like a colon sign, you can say separator is equal to colon. Okay. In case of multiple values you are having, you can go with a separator. And if you have to close the line, that example you have taken, you're talking about seconds. You're talking about seconds? Okay, let me check. See, separator will be placed whereas you'll find a comma. Okay, separator will be placed where you'll find a comma. After 20 there is no comma, that's why the comma is there, but that is used to define the value of separator, so it's not a part of that separation, so it will not come. Is that okay? You can try it. Let me try it here only. Okay, let me try this. Okay, I'm presenting my screen, you can check. Okay, you can see this. When I say print hello, okay, so hello is printing. Let me open a code. I'll write this in script mode. Okay, so I'm saying print hello, and I'm saying print India. Okay, so let's run it. So you can see hello India has come. Okay, hello India. So I'm editing the file again. And I'm saying hello, and I'm saying end is what? There's no gap. I'm providing no gap in between and. Okay, and में जो quotes हैं यहाँ पे मैंने कुछ भी gap provide नहीं किया है. Let's run this. So hello India has come without gaps. You can check it. So let's go back to the file. And I'm saying what? I'm saying a hash in between the lines. Means when the line will change, okay, in place of changing the line, it will place a hash in between two prints. Okay, let's run this. Let's run this. Okay, so you can see hello and in space has come, and both are coming on the same line. So this is the basic idea that I wanted to tell you. And if you will put a gap in between this, gap or two gaps, so accordingly your answer will come. Okay, let me run this again. So you can see hello India has come. You can check at the bottom side. Let me show you. You can see that hello in India has some gaps. Okay, so this is the thing that I wanted to tell you. Now again that separator thing. Okay, so I'm saying hello comma India and say comma Delhi comma Mumbai. Okay, so I'm saying this way. So let's run this. You can see hello India, Delhi, Mumbai, these things have come. Okay, now let's make some changes and retry it. Then I'm saying separator is equal to hash. Okay, then I'm running it. You can see hello India, Delhi and Mumbai. So this has been used as a separator.
Okay, this was the thing that I wanted to tell you. I believe that this idea is clear to you. Still, if you have some questions, you can ask. Okay, so let's go to the next topic. Today I want to start a new concept, okay? And this concept is selection construct. Selection construct, okay? So यहाँ से हमारा सीक्वेंस खत्म हो जाता है. इसके बाद हम लोग सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करते हैं. जिन लोगों को ध्यान है दैट इज़ गुड. जिन लोगों को ध्यान नहीं है मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का आइडिया क्या है. जहाँ पर अभी तक हम लोग जो भी कोडिंग कर रहे थे उसमें दो चीज़ें थी हमारी कोडिंग में. 2 points वर इम्पोर्टेंट. नंबर 1, all statement that we are writing, all statements were executing. Okay, this is the first thing. आप चाहे कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. नंबर 2, और ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये टॉप टू डाउन मैनर में होगा. टॉप टू डाउन मैनर में. ओके. सेकेंड जो थिंग थी कि हर स्टेटमेंट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो वी कैन से ईच स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ओनली वंस. तो ये दो चीज़ें थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो था, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमने पढ़ा था सीक्वेंस में. ये हमारा सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट था. ओके, ये जो हमने पढ़ा था. अब हम बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में. बेटा टर्न ऑफ द माइक. सिलेक्शन में सबसे पहली बात, देयर विल बी स्टेटमेंट्स विल नॉट. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. Let me check. I have not shared it actually, sorry. Is it okay now? Okay. So selection construct में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे. राइट? there will be statements which will not execute. Okay, तो पहली चीज़ क्या हुई, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे. अभी एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है, यानी हमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना पड़ता है. सो बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया वहाँ पर डिसाइड होता है कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. इसके लिए हम एक क्राइटेरिया पे डिपेंड होते हैं जिसको कहा जाता है बच्चों कंडीशन. ओके, सो कंडीशन एक्चुअली डिसाइड्स कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे. अगर कंडीशन ट्रू होती है ओके तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. राइट? ट्रू का मतलब अगर कंडीशन जो आपने लिखा है वो सही लिखा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने गलत लिखा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंडीशन के बेस पर ये डिसाइड होता है. अब ये कंडीशन होता क्या है? कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है बच्चों. एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें ऑपरेंड्स होते हैं. ऑपरेंड्स का मतलब होता है वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो एक्सप्रेशन होते हैं. एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें ऑपरेंड्स होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. ये आपको याद रखना है. अभी तक हमने जो ऑपरेटर्स यूज़ किए थे वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किए थे. अब हम जब एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे. कौन से? रिलेशनल ऑपरेटर्स. और उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? ऑपरेंड्स. मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कंडीशन का. जैसे मैंने लिखा एज ग्रेटर देन 18. ओके, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है. ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों है? इसका आंसर बहुत सिंपल है.
कि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं। तो जहाँ पे भी रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाएंगे वो हमारी कंडीशन बन जाती है, यानी वो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, उसकी वजह से हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाती है। अब ये एज पे डिपेंड करता है कि जो हमने लिखा है ये एक्सप्रेशन सही है या गलत है। मान लीजिए किसी की एज 17 है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, और अगर किसी की एज 19 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। इसके अलावा कंडीशनल एक्सप्रेशन का कभी कोई रिजल्ट नहीं आता है, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। इज दैट ओके? सो आई बिलीव द बेसिक आइडिया ऑफ कंडीशन इज क्लियर टू यू एंड द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। अभी मैंने ऊपर लिखवाया था कि इसमें ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो हाउ कैन वी डिसाइड दैट विच स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट? वी कैन नॉट डिसाइड इट. This condition or the condition by which those statements are connected, they decide. If the condition is correct, for example, we have written condition, this condition. Then we have written a statement and we have written one more statement, okay? We have given some separator in between the statements. Now if the condition is correct, then statement 1 executes if the condition is true. And if the condition is false, then the next statement that we define after else, that executes. So this is the basic idea. So either this statement will execute or this statement will execute. So हमारे पास जो choices होती हैं उसमें से कोई एक statement execute होता है। बहुत easy है समझना। Python में conditions को apply करने के लिए हम एक statement use करते हैं जिसका नाम होता है if statement. Okay? if जो होता है बच्चों वो एक keyword होता है, यानी ये compiler में define है। ओके इसको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे 10 मिनट हैं हमारे पास क्लास को ख़त्म करने के लिए। पूरे 10 मिनट यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि क्या मैं समझा रहा हूँ, उसको साथ साथ नोट भी करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को अप्लाई करने के लिए। ओके स्टेटमेंट इज़ यूज टू अप्लाई सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। मैं यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बच्चों। जब मैं इसको समझा दूँ इफ़ को तो मुझे याद कराना कि मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है। हालांकि मुझे इफ़ से पहले करना चाहिए था पर कोई बात नहीं, मैं पहले इफ़ लिख दिया तो इफ़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इफ़ इज़ यूज टू अप्लाई सिलेक्शन। ओके अब इफ़ को लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वी विल यूज़ इंडेंटेशन। ओके यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी अब टिपिकल हो जाएगी। इंडेंटेशन अगले 10 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जो भी मैं कह रहा हूँ, और क्वेश्चंस पूछते रहेंगे मुझसे जो भी आप पूछना चाहें। आस्था सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट अगेन। आस्था बेसिक आइडिया जो है सिलेक्शन का वो ये है कि हमारे पास एक कंडीशन है, उसके बेस पर हमें डिसीजन लेने हैं। बस हमारा जो बेसिक आइडिया है वो यही है। सो बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन वी हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजंस। ओके वेट फॉर अ मिनट। ओके यहाँ पे जो इफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडेंटेशन, क्योंकि इंडेंटेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इंडेंटेशन में। मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ 2 मिनट, तब इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज I just want to make sure that the basic idea of this explanation has to be clear to you. Okay? Just wait for a minute. Okay. So यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि indentation is very important. Okay? इंडेंटेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इंडेंटेशन में हमें काम कैसे करना है। तो इंडेंटेशन का आइडिया क्या है? ओके आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मार्जिन्स के बारे में पढ़ा होगा, वर्ड में मार्जिन्स के बारे में, राइट? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन, लेफ्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट। व्हेनेवर वी राइट प्रोग्राम वी ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज और द फाइल, राइट? फाइल के एक्सट्रीम राइट से हम लिखना शुरू करते हैं। अब क्या होता है बच्चों
जब हम लिखते हैं तो उसको हम कॉलम 0 बोलते हैं, दैट इज कॉलम 0. ओके, when we start writing, we generally start writing from column 0 only. When you write program in Python, you just try write first line, selection से पहले write first line in the first column and write second statement from the second column. Okay, you will observe there will be an error. There will be an error. Why this error is coming? The answer is very simple. Whenever you write in Python, you have to keep an idea of the columns in which you are writing a statement. So if you are using a program of sequence, the indentation, the columns from which your line is starting has to be constant, a single 0 column होना चाहिए. Alright, but if you are using if, selection construct and repetition construct, after selection construct you will study repetition construct. In selection construct you are writing statements and you observe that there is a need of that if statement, right? So you will write if statement in 0 indent itself. Okay, but when the statement related to if will come, then that statement has to be on next indent. Now how will this next indent come? Yeah, how will we write it? Next indent can be used by placing a space between previous line and current line, number 1. Number 2, better do not go with space, go with a tab character always. You can check there is a tab character on the keyboard that puts a gap of 4 letters. Why am I emphasizing on putting tab character while putting an indent? Because 4 characters gaps are quietly visible, like you can read those gaps properly. But if you'll put a single space, so it will be hard to recognize whether we have given a space or not. So always go with tab to provide indentation to a statement. अब statement indentation जाना किस में है, मैं इसको simple English में समझा रहा हूँ. मैंने आप लोगों से शायद एल्गोरिथम डिस्कस करते समय एक पॉइंट डिस्कस किया होगा कि वी हैव टू राइट एल्गोरिथम like how do we go to school. So you say we get up at 6, indent 0. We freshen up, indent 0. We take breakfast, indent 0. We come out from the house, indent 0. Now if raining, then we take umbrella. If raining, right? So we do not regularly take umbrella, but if it is raining, then we have to take umbrella. Now what is the condition? The condition is if raining. So it will be on 0th indent itself, but take umbrella is the statement which is connected to if raining. So it is a statement which is connected to if, so take umbrella will come on the next indent. I think it is clear to you when to put indent. Okay, I'm giving 1 minute, then you can ask questions related to it. Okay, then I'll write this on the screen. Okay, if you have any question you can ask. Indentation. Okay, whatever I have spoken right now, I'm just writing it on the screen. I believe screen is visible to you. Okay, so I say we are writing a program, say get up, we are writing a pseudocode, right? Get up at 6. We took bath, took breakfast. See, all are starting from 0 indent. Okay, then we came out of house. Then we say, then we have seen that it is raining. So I say if raining. Now one more thing that you have to understood. If there is a condition written, if I say if raining, क्या ये statement complete है? Obviously it is not. It is expecting one more statement.
Since it is not complete, then you will be putting a colon sign to show a continuation. So if raining, then I'll say take umbrella. Okay, then go to school. ये जितना भी है बच्चों, this is on indent 0. यहाँ पे मैंने एक टैब दिया, ये आ गया इंडेंट 1 पे. ओके, दिस इज 0 इंडेंट, दिस इज 1 इंडेंट. This is showing that if is not yet completed, we need one more statement, so we are writing next statement. So this is the basic idea of if. So let's have one more example. So I'm saying input age. If age is greater than equal to 18, put a colon sign. Print can vote. I'm just writing pseudocode, okay? Else, again, continuation है. Print cannot vote. CAN can't vote. Okay, can't vote. So indentation 1, 0, 0, 0. ओके, बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? आज इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आप जो भी क्वेरीज हैं